Hey, hello viewers. We have Vandana with us. Welcome, Vandana, today. Thank you. And I hope you all a great evening. So let me introduce Vandana. Okay, and she's also associated with our firm, which is we are very grateful for that. So a little bit about Vandana, as Vandana is wellness coach who specializes in weight loss. She's also she started her weight loss journey by coaching herself first and lost 17 kgs in post pantrum weight. She has been coaching since 2013 and helped every client every day with the education about meals and health. She believes that health education is need of the day since last 2 years, and her clients lost weight without giving up their favorite food. What a healthy way! Wow. Her mission is to make healthy eating and weight loss simple and easy. Yeah, So this is a little bit about Vandana, and as you know, I'm a Jyoti Dadlani. I'm a psychologist, and Vandana is here to help us how she will tell us how this actually, mental mood variation, or how is mental health and nutrition is correlated, and how we actually can improve our eating for healthy lifestyle, as well as healthy, kind of taking care of your mental health. So let's shoot up with the questions. So my first question to you, Vandana, is how do we assess our fitness, immunity, or health in general? great question. Superb question. Thank you so much, Jyoti. Thank you for inviting me so beautifully. Whatever you said about me, is that was so sweet. Thank you so much. So basically, see, what we do wrong is we assess everything, our financial situation, our home, our car or vehicle, whatever we have an assessment of everything. We know when something is going wrong, except our health. And you've been in doing this amazing work in mental health for so long, so you do know that mental health india may, it's the last thing that people think of. So True. basically whatever facts and figures we get is of america. जैसे अमेरिका में बोलते हैं 7% लोग they are going through some form of deep डिप्रेशन और डीप मेंटल. True. बट इंडिया का कुछ ऐसा हमको स्टैटिस्टिक्स मिलता ही नहीं. सो द फर्स्ट स्टेप इज असेसमेंट ऑफ कोर्स, हमारे बॉडी का, हमारे माइंड का. सी द मिनट यू वेक अप इन द मॉर्निंग, वी एज ह्यूमंस एज अ स्पीशीज, कभी कोई डॉग या कोई लायन या कोई कैट ऐसे नहीं बोलेगी यार आज मुझे बहुत बोर हो रहा है. आई डोंट थिंक एनी एनिमल एक्सेप्ट ह्यूमन बींग्स विल डू दैट. आज मेरी उठने की इच्छा नहीं हो रही. So the minute we wake up in the morning, that's the time that we have to assess our mental health, our physical health, our social health. If somebody is inviting you to a party and you don't want to go, that is another, I won't call it a problem. That can be a form of self care, but you'll have to assess that. How many times do I know don't want to go out in public, or how many times do I don't want to get out of bed in the morning. So True. ये जो बात होती है, this is, it is screwing up our minds. And more than before, when our parents were young, हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और हमसे ज़्यादा, आई हैव टू किड्स, लाइक वन इज़ 18 and one is Hmm. 14. So I know that it is screwing up their minds more than our generation. So True. basically health assessment should start with your physical assessment. आपका Hmm. physical assessment क्या बोल रहे हैं? So if you look up in the विकीपीडिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है हेल्थ इज नथिंग बट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, ये तीन चीज़ों को मिला के आपका हेल्थ. ज़रूरी नहीं है आप हेल्दी, आपको कोई बीमारी नहीं है इसका मतलब आप हेल्दी हो, राइट? सो बिल्कुल. WHO ये बोलता है, बट हम क्या बोलते हैं? तो सबसे पहले हमको हमारे बेसिक, जो हमारी बॉडी है, हमारे जो भी
वी आर फेसिंग फिजिकली, जैसे मुझे अगर सीढ़ी चढ़ के छत पे जाना है, एम आई थिंकिंग ट्वाइस? अगर मुझे इफ आई सी अ फोन कॉल, एम आई थिंकिंग ट्वाइस, डू आई नीड टू पिक दिस अप ऑन? तो ये सारी चीजें कम्स अंडर द असेसमेंट। ये हमको अपना वन प्लस वन टू, टू प्लस टू फोर अपने बॉडी के ऊपर करना है। सो सबसे पहले आपको अपना फिजिकल असेसमेंट करना है, फिटनेस असेसमेंट। आर यू मोटिवेटेड टू एक्सरसाइज? मंडे से करूंगा, 1 जनवरी से जिम लगाऊंगा, ये जो एटीट्यूड है, ये मोटिवेशन आ रहा है क्या कहीं ना कहीं एक्सरसाइज के लिए? अगर आपके बच्चे या आपका पार्टनर या आपका फ्रेंड आपको बोलता है चल रेस करते हैं, हाउ लॉन्ग आर यू एबल टू रन? कितने लोग मैराथन्स करते हैं? सो दैट इज योर फिजिकल फिटनेस असेसमेंट। आपने assessment आपको। एक्सरसाइज की, उसके बाद आर यू फीलिंग सोरनेस, आपका पैर दुख रहा है, आपका हेडेक हो रहा है, दैट इज योर फिजिकल असेसमेंट। ये तो एवरीबडी डज, क्योंकि हम जब जिम जाते हैं हमको पता है कि हमको ये करना है। बट द सेकेंड अगेन इज योर न्यूट्रिशन असेसमेंट। हम्म। World Health Organization says 7 servings of fruits and vegetables every day. कितना हम्म। खाते? एक एप्पल खा लिया तो खुद पे उपकार। हाँ, सच में। राइट? 2 टुकड़े गाजर हम्म। के खा लिए, ककड़ी के खा लिए, सो हो गया ना, मैंने सैलेड खाया। या मैं सैलेड खाने के लिए कोई रेस्टोरेंट में जाऊंगी, तब मैं अच्छा सैलेड खाऊंगी। बट घर पे योर थाली इज द सेम, रोटी सब्जी दाल चावल, एंड दैट इज योर न्यूट्रिशन असेसमेंट। हाउ मेनी हम्म। raw foods are going into your body? ओके। You must know this, ज्योति, क्या होता है कि हमारा जो सेरोटोनिन होता है, जो हमारा हैप्पी हार्मोन है, जो हमारे हम्म। मूड को स्टेबलाइज करता है, मोस्ट पीपल डोंट नो कि वो हमारे इंटेस्टाइन्स में बनता है। इट इज फॉर्म्ड इन आवर गट। मेरी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें अगर प्रॉपर, वी ऑल हर्ड ऑफ दिस गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया, अगर एब्सोल्युटली। उसमें इनफ गुड बैक्टीरिया नहीं है तो मेरा मूड ठीक नहीं रहेगा। इमेजिन वेकिंग अप इन द मॉर्निंग एवरी डे एंड पेट साफ नहीं होना, you're feeling bloated throughout the day, you're not feeling like eating anything. So this is your nutrition assessment that helps you fix your mood. Now imagine you wake up early, you go for a run, which is your physical assessment. आपका पेट अच्छे से साफ हुआ, आप एक बनाना या एक एप्पल खा के आप रन पे गए, नाउ हाउ यू विल फील? What will be your mental assessment then? Right? So हाँ, these two are directly makes connected sense. to our immunity. That is our हम्म। immunity assessment. अब आपका immunity assessment क्या होना चाहिए? स्ट्रेस कितना जल्दी ले रहे हो? एक फोन कॉल से हमारा पूरा दिन का मूड खराब हो जाता है। करेक्ट? True. यू मस्ट बी हैविंग लॉट्स ऑफ पेशेंस, जो आपको बोलते हैं कि मेरा, आई डोंट लाइक स्पीकिंग टू दिस पर्सन, मोस्टली स्पाउसेस, फैमिली। तो how much are you stressed? That is your again immunity assessment. कितना स्ट्रेस ले रहे हो? इन्फेक्शन बार बार हो रहे हैं क्या? आर यू हम्म। गेटिंग बीमार बार बार हो रहे हो क्या? सर्दी खांसी बार बार हो रही है क्या? समथिंग योर बॉडी टेलिंग यू, राइट, दैट समथिंग इज नॉट राइट। चोट लग गई, कितने जल्दी हील हो रहा है? ओके। That is your immunity assessment. So these things, it's like, what do you call it, everything is connected to each other, Which? and everything is connected to our body. So हम्म। I think हमारा physical assessment should be everything, starting from our mind, going down to our gut, which is our intestines, and then going out down to again मैं physically कितनी अच्छे से रह सकती बिल्कुल। Very well said. I mean, very, we put it that way, probably शायद ही इतना बैठ के सोचा होगा कि इतना इंटरकनेक्टेड है। सो वी हैव सर्टेन ऑफ व्यूअर्स, सो आई वुड रिक्वेस्ट, अगर आपको न्यूट्रिशन के बारे में या आपका फिजिकल असेसमेंट के बारे में कुछ भी क्वेश्चंस हो, सो यू ड्रॉप इन अ कमेंट्स एंड वी आर हियर टू आंसर यू। So, Vandana, my next question to you is, like you said, our steroid levels or our dopamine levels are actually for happy mood. So, what kind of food people should intake? है। Right. So, see, my mood is directly connected to my gut, like I said. Okay. तो जब भी मेरी थाली मेरे सामने आती है, तो Hmm. मैं थिंक ट्वाइस और थ्राइस कि ये थाली में ऐसा क्या है जो मेरे आंखों के लिए है,
जो मेरे हार्ट के लिए है, जो मेरे Hmm. लंग्स के लिए है। बिकॉज when we go deep down into our food, mostly we are only eating what our ancestors ate, Hmm. right? They were they didn't have any problems related to mental health, because they worked on their own. They didn't have as many vehicles as we do right now. They walked everywhere. They didn't have you sitting in Bombay, me sitting in Nagpur talking to each other. They didn't have this, right? Very true. Whatever communication was there was through postcards, telegrams, letters. Wherever they needed to go, they walked or they Hmm. cycled. Watch old movies, you see Saira Banu cycling. तो हमने वो तो चेंज कर लिया ना, ज्योति. We changed our mode of communication. We changed our mode of transport. We changed our mode of dressing, right? Imagine in 1950 or 60 somebody wearing such a smart dress as you are right now. What would their family say? Ki, where's your sari, right? So Yeah. ऐसा होता था, but we've changed that. We adapted to our environment right now. Everything except our thali. Hmm. अब मेरी जो मम्मा खाती थी, मेरी जो नानी खाती थी, मेरी जो दादी खाती थी, मैं भी वही खा रही हूँ, which is roti, Hmm. sabzi, dal, rice. Okay, so I keep Hmm. telling my clients this, start counting your organs, right from your hair to your fingertips of Uh, your toenails. hmm. तो इफ यू स्टार्ट काउंटिंग ना, आपकी फिंगर्स कम पड़ जाएंगी. Hmm. आप कभी सोचते हो क्या मेरे ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स हैं या वाइट ब्लड सेल्स हैं, या उसका खाना क्या है? मेरा बिल्कुल. जो स्किन सेल्स है उसका खाना क्या है, राइट? Hmm. तो मैं जब डीप जाती हूँ इनटू माय इंटेस्टाइन्स, आई फाइंड दैट थ्री थिंग्स. For those Hmm. viewers who I don't want to confuse, who are just here to get their health better or get their mood better, three things that you can do to improve your mood which is related to nutrition is: include lots of probiotics in your diet. Like. Once probiotics can be any fermented food, idli, dhokla, dahi, Hmm. our Oh, good old okay. dahi जो मम्मा रोज जमाती है, that is an अच्छा. excellent source of probiotics. Probiotic. See, guys, Anything that is value fermented, dahi. right? छाछ, लस्सी, Okay. नारियल पानी. Hmm. Summers में don't go for the Pepsi. I won't name any company, but don't go for the cola bottle. Go for a Cola नारियल. bottles, sodas, yeah. Exactly. Exactly. Go Don't for a put yourself. नारियल Hmm. पानी, go for a छाछ or a lassi or a nimbu pani, roadside Okay. nimbu pani pee lo. That will improve the good bacteria in your intestines, and it will help Okay. your. So that is the one thing that you can add to your diet every day. Hmm. Second thing that you can add to your diet is fiber. Hmm. फाइबर इज इन एवरीथिंग. आप स्प्राउट्स खा लो, आप सब्जियां खा लो, आप लीफी वेजिटेबल्स खा लो. Instead of going with gehu, go with bajra, go with jawar, go with a multi-grain atta. Because Hmm. the gluten, I'm not into any diet or anything, but the gluten does play havoc with your intestines. It's Yeah, very very true. sticky, and it increases the bad bacteria, and bad bacteria बढ़ेगा तो फिर bad mood भी बढ़ेगा, and सब कुछ बिल्कुल, गड़बड़ होगा. बिल्कुल, बिल्कुल, So that is the second thing. Third thing is of course free water. 3 लीटर तो पीना ही चाहिए. बिल्कुल. So that's, I think, how you can balance your diet with your mood. हाँ. अच्छा, बहुत बार ना वंदना क्या हो जाता है ना कि व्हेनेवर वी फील लो वी टेंड टू हैव समथिंग स्वीट and yeah, फिर whenever even the depression is more or less, I've seen people eating more, decline towards eating towards chocolates या फिर sweet बोल लो या overall eating disorders भी altogether different subject है. But how to control that? बिकॉज़ ऐसा लगता है शुगर खा लिया कुछ भी एंड देन यू यू फील हैप्पी, यू फील इंस्टेंट एनर्जी. सो आई वुड से अदर सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी. बट देन दैट इज समवेयर इट्स नॉट रूट कॉज एनालिसिस नहीं हो रहा है उससे. बस मुझे अभी ठीक लग रहा है. आई एम ओके. आई एम व्हाट आई एम हैपनिंग एंड देन आई एम गोइंग अलोंग. दैट्स Correct. I mean, how do we, whenever we feel like that, how do we, what else we can do if you want to control this kind of stuff? Wow. So many viewers must be thinking about this right now. Such an amazing question.
right? Instead of going, okay, I'll change the viewers thinking in one line. Hmm. अगर मेरे घर में like Jyoti, I'll ask you because I can't see any of the viewers. I'll ask you, which car do you drive? What? Which car do you drive? You don't drive. Okay, but you have a car, you have a vehicle at home. Or which one do you have? I have a desire. You have a desire. Okay. तो if I tell you, ज्योति, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, डीजल बहुत महंगा हो गया है, एंड मैं तुमको साल भर का फ्री केरोसिन देती हूँ, वाई गो फॉर पेट्रोल एंड डीजल, केरोसिन पे भी तो कार चलती है, तो वाई डोंट यू स्टार्ट गोइंग विथ केरोसिन एंड कार तो चलेगी. सो व्हाट विल बी योर आंसर? मेरी कार खराब हो जाएगी. I cannot put anything on earth, right? So my maintenance cost will be higher than the petrol cost probably. एग्जैक्टली exactly. तो कार पहले ही दिन खराब होगी क्या, कि पहले धुआं छोड़ेगी, फिर ऐसा होगा क्या? Eventually, I think it's gonna, burn out एग्जैक्टली exactly. slowly. तो एक्सपेंसिव कार, एक्सपेंसिव फ्यूल, एंड Hmm. डिजायर का या जो भी कार, वट एवर कार वी ड्राइव, स्टार्टिंग फ्रॉम 15 lakhs to 50 lakhs to 50 crores, जो भी कार हम चलाते हैं, अगर प्रीमियम कार है तो प्रीमियम फ्यूल जाता है. नाउ इफ आई आस्क यू, ज्योति, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ योर, क्या कॉस्ट लगाएंगे हम अपने बॉडी का? अनमोल है. एग्जैक्टली. नाउ विल यू पुट cheap fuel in an Anmol car, Hmm. like a 10 rupee dairy milk, 10 rupee chocolate bar. So एक मेंटेनेंस कॉस्ट जैसे कार का हाई हो गया ना, ऐसे ही बाईपास का कॉस्ट हाई होता है, बिल्कुल. डायबिटीज, न्यूरोपैथी का कॉस्ट हाई होता है. Whatever problems we are facing right now have started 7 years back. हमारे बॉडी में कोई भी डिजीज आने के लिए 7 साल लग जाते हैं. लाइक व्हेन यू सो अ सीड, Hmm. इंस्टेंटली वहां से स्प्राउट नहीं होता. इट टेक्स अ कपल ऑफ बिल्कुल. वीक्स फॉर बिल्कुल. द प्लांट टू कम आउट. तो हमारे बॉडी में बीमारी जड़ करती है, बट इट्स नॉट सीन फॉर लॉट मेनी ईयर्स. बट दीज अनहेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस जो हम बिना सोचे समझे अपने एक्सपेंसिव कार में, ये जो लो प्रीमियम फ्यूल डालते जा रहे हैं, दिस is affecting so many people. You look around you, you'll see skin problems, you'll see hair fall, you'll see बेसिक चीज़ों में प्रॉब्लम हो रही है. सुबह उठने के बाद एक थायराइड की गोली खाने के बिना दिन स्टार्ट नहीं होता, एक बीपी की गोली खाए बिना दिन स्टार्ट नहीं होता. एंड द प्रॉब्लम इज, लोगों को लगता है कि ये नॉर्मल है, विच इज नॉट. This is नहीं. not normal. Depending on a medicine for our health is absolutely abnormal. But अगर हमने अपनी कार का, अपनी गाड़ी का फ्यूल चेंज किया, if we just shift to a healthier version of, ऐसा बोलते हैं कि जो ट्रेडिशनल डाइट्स थे हमारे, जो Hmm. हमारे पेरेंट्स, हमारे एक मेडिटेरेनियन डाइट होती है, या Hmm. रॉ फूड डाइट होती है, वो Hmm. डाइट पे जैसे ही वी स्टार्ट शिफ्टिंग एटलीस्ट one meal per day. I'm not asking you to totally revolutionize your diet. Hmm. Just go with one meal a day. If you go Hmm. with one meal which is raw, which doesn't have salt, ऐसा खाना जो आपके कढ़ाई में नहीं गया, जो आप बिल्कुल. प्लेट पे काट के खा रहे हो, that is one meal a day. So you'll start seeing changes in 4 weeks. If you go with 2 meals a day which is raw and one meal which is cooked, you'll start Okay. seeing changes in 2 weeks. So you're telling कि रॉ मील, entirely रॉ मील लेना चाहिए ऐसे? 100%. Okay. Nice. Raw meal includes any beans which is boiled. हाँ. It includes any protein. I'm a vegetarian, so I focus more on vegetarian diets because मीट जब मेरे बॉडी में जाता है तो उसको निकलने के लिए 3-4 हफ्ते लग जाते हैं. तो आई डोंट जी फोकस अ बिल्कुल. लॉट ऑन नॉन वेजिटेरियन डाइट्स. बट यस, बॉइल्ड एग, हाँ. बॉइल्ड चना, बॉइल्ड राजमा,
mixed Hmm. up with lots of veggies. You can add nice dips to it. आप उस पे नींबू डालो, उस पे कोई भी एक अच्छा डिप बना के विनेगर डालो. Add lots of dhania. Okay. So if you make a nice, see, we all have Google. Absolutely. Problem ये है हम अच्छी चीजें नहीं ढूंढते. If you go on हाँ. Google and you look for healthy, attractive salads, you will find a list of things, but Absolutely. हम ढूंढते नहीं है. So if you go with that, Jyoti, so Hmm. 100% you'll start seeing mood improvement में बहुत फर्क पड़ेगा, because your digestion will be good. And बोलते हैं ना, पेट सफा तो मूड भी सफा. So I'll change that. So yeah, raw food does help 100%. Okay, very nice, very nicely said. So we have one question from the viewer: How to maintain healthy diet with a busy work schedule? Very important. Okay. Oh, yeah, good question. So thanks for asking. See, if you are working 9 to 5, you have ample of time from morning 5 to 9. Hmm. Ample of time. Problem क्या है पता है, हम उठते ही 7:30 8 बजे. Okay, and we all have one day off per week. So what I suggest to my clients, I tell them संडे के दिन पूरे हफ्ते की तैयारी करके रख दो. Hmm. कीप ऐसा खाना फ्रिज में रखो जो यू कैन ऑन द गो आप लेके जा सको. जैसे? इंक्लूड प्रोटीन. सी, सो व्हाट यू कैन डू इज सैटरडे नाइट चना या राजमा भिगा दो. Hmm. संडे मॉर्निंग उसको बॉईल करके ड्राई करके फ्रिज में स्टोर कर दो फॉर द होल वीक. यू कैन स्टोर इट इन द Okay. फ्रीजर. Just Okay. take out a cupful of that and give it a stir fry. Put your veggies into that and make a nice multigrain roti. Your protein rich, fiber rich lunch is ready. And carry a glass of chach with that. Oh, very nice, very nice. So Sunday के दिन when we have time, मखाना भूंज के रख दो. Just हाँ, बिल्कुल roast बिल्कुल. lots of makhana in ghee, black pepper, salt. Just roast it and store it in boxes so that you have ample when you come back from office and you're looking for biscuits, you're looking for हाँ. chuda, you're looking for chakli. So if you have that makhana ready on the table, if you have a box of dates, if you have a box of walnuts ready on your dining table, जो दिखता है हम वही खाते हैं. खाते हो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. For working people, plan ahead. Have हाँ. boiled food, boiled protein stored in your fridge. Have lots of fruits bought every day on your way to, on the way to work or on the way back home. क्योंकि we live in India, right? And हर घर के नीचे, I don't, even बॉम्बे में ऐसे ही होगा. नागपुर में तो you walk 500 meters, you find a सब्जी वाला ठेला, फ्रूट वाला ठेला. हम्म. प्रॉब्लम क्या है पता है ज्योति, हम वो ठेले को बाईपास करके भी सी द सुपरमार्केट शॉप, और वहाँ वो जो चिप्स के पैकेट्स और बिस्किट्स के पैकेट्स रहते हैं ना, हमको वो दिखते हैं. वी डोंट नहीं, सी. बट कभी कभी ना वंदना, अभी ये हाल क्यों हुआ है पता है? लॉट ऑफ डॉक्टर्स आल्सो सजेस्ट नाउअडेज कि अब शुगर, बिकॉज फ्रूट कंटेन अ गुड शुगर. तो बहुत बार जो जो बॉर्डर लाइन शुगर है, या फिर डॉक्टर बोलते हैं दिस इज ये पकाया गया है, सो विच इज माइट गिव यू एलर्जी, सो यू ट्राई टू अवॉइड. तो फिर वो वही हो जाता है, फिर खाए क्या? अब जैसे इवन फिर समर इज अ मैंगो सीजन, आई एम अ हार्डकोर मैंगो लवर वंदना, बट आई एम माई सेल्फ इज अ बॉर्डर लाइन शुगर. एंड इट इज सो डिफिकल्ट कि आपका एक फेवरेट फ्रूट है जो आप खा नहीं पा रहे हो. एंड ऊपर से आपके डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि आप फ्रूट नहीं खाओ, बट देन अदर पीपल सेइंग ईट फ्रूट. वेरी कंफ्यूजन है, बिकॉज फिर कहाँ, मतलब क्या करे क्या? या, माय फेवरेट टू. आई लव मैंगोज. साल में एक बार तो मिलता है. सो you being a diabetic, pre-diabetic, or a, प्री just डायबिटिक क्या? borderline diabetic, you can eat amras every day. You ओह, can eat ओके. mangoes every day. ओके. Just don't eat them 2 or 3 hours after your meal. Don't eat it as a snack. Never have a sweet snack. Okay, that's why I suggest to everyone, like makhana is my all-time favorite. It is high in fiber, high in protein, high in good nutrients. It has lots of potassium. So
take a bowl of makhana, two walnuts, ठीक Hmm. है, and then take your mango. Hmm. First have this and then have that. uh, Okay. Actually बॉडी का हमारा सिस्टम कैसा रहता है ना ज्योति, इफ यू ईट फाइबर फर्स्ट, Hmm. फाइबर मेक्स अ मैश इन योर इंटेस्टाइन्स, ताकि Hmm. उसके बाद जो भी स्वीट आया बॉडी में Hmm. वो डायरेक्ट ब्लड में जाके ब्लड ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ा. Now, I'm Oh. not a Okay. doctor, but I know this Okay. happens because it has happened to my clients. Because the diets Hmm. I give them, I always tell them to add a salad before their meal, 15 minutes before their meal. If you, like I'm telling you, if you eat a salad, एक गाजर, एक ककड़ी, एक टमाटर, like three vegetables का एक salad तुमने अच्छा बड़ा बनाया, add a little dahi to that, add some til to that, add some flax seeds to that. वो Hmm. अच्छा सैलेड तुमने अगर खा लिया, देन आफ्टर दैट इफ यू गो विथ योर प्रोटीन विच इज योर दाल और योर राजमा और योर एग्स और योर चिकन वट एवर यूर ईटिंग, देन इफ यू गो विथ योर आमरस और योर मैंगो, कभी ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ेगा बॉडी का. तो सब That खा is सकते so हैं. nice. डू नॉट वरी कि फ्रूट्स डायबिटिक्स नहीं खा सकते. यू कैन ईट वट एवर यू वॉन्ट, यू जस्ट नॉट I ईटिंग think इट इन that's द. gonna relieve for me, people like me. I got. या. So I think another viewer also asked that, is there a right or wrong time of eating fruit? So I think उनको भी आंसर मिल चुका है. Yeah. Either early in the morning when you're, empty stomach, उस टाइम पे भी शुगर नहीं बढ़ता. And immediately after your meal, if you have included a fiber rich salad and a high protein meal, उसके बाद आपने फ्रूट खाया तो नो प्रॉब्लम. अच्छा, ये अभी ना डिटॉक्स डाइट का बड़ा ये चल रहा है. Then people also have a detox drinks. तो उनका भी कोई टाइम होता है, and how does it affect on your body? हमारा बॉडी बहुत बड़ा डिटॉक्स का मशीन है. इसको डिटॉक्स ड्रिंक की ज़रूरत नहीं है. हमारा बॉडी एवरी डे, इफ़ यू सिट इन द सन ना ज्योति, एंड व्हेन द सन रेज आर कमिंग ऑन योर हैंड एंड यू जस्ट डू दिस, तो you'll see lots of things flying off, छोटे छोटे आपके डेड सेल्स. you'll see lots of dust in the sunlight में आपको दिखेगा. So right now you are sitting, I'm sitting, our body is throwing off millions and millions of dead skin cells out Hmm. of our body. Okay. अंदर सेम प्रोसेस चल रहा है. देर इज अ डिटॉक्सिफिकेशन गोइंग ऑन राइट Hmm. नाउ व्हाइल वी आर स्पीकिंग. Hmm. डिटॉक्स डाइट वही डाइट होता है जिसमें रॉ फूड ज्यादा है और कुछ नहीं होता. तो डिटॉक्स डाइट का जो हाई फाई फंडा है विच लुक्स सो अट्रैक्टिव, आपको यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट, you just have to start putting premium fuel in your car. प्रीमियम फ्यूल डालना शुरू करो, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाना शुरू करो, रॉ फूड खाना शुरू करो, प्रीमियम कार फरारी जैसी चलने लगी. Very nice. Very, very well said, Vandana. Very well said. Okay. So my this would be kind of last question to you because तुमने already काफी बता दिया. What is a global nutrition philosophy? Oh yeah, so this philosophy I've been following since last 10 years. I work on this philosophy because if someone like you were to come to me for weight loss, because I specialize in weight loss, so if someone like you were to come to me, I would first sit with you for 20 minutes and gauge your routine, gauge what you're eating, and for the first whole week I would stay every day in touch with you to just see what you're eating. I normally don't give out generalized diets. तो ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसफी का आइडिया ही इसलिए बना था कि ये ऐसा खाना है जो पूरे ग्लोब में हर कोई खा सकता है, वेदर यू आर इन द 1% हाई फाई रिच पीपल, और यू आर इन द नॉर्मल हायर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और द पुअर मिडिल क्लास. ओके, तो ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसफी में बेसिक कुछ चीज़ें आती हैं. सो द फर्स्ट थिंग इज द मैक्रो एंड द सेकेंड थिंग इज द माइक्रो. नाउ द macronutrition is something which you need a lot of, like you need a lot of protein. मेरा वेट अभी जैसे 60 है, तो I need Wow. 60 grams of protein every day. That is a philosophy that will work in US, it will work in Australia, it will work in the Bahamas, it will work in China, it will work everywhere. आपका वजन 50 किलो है तो you need 50 grams of
good quality vegetarian protein every day. Okay, so that is your macro. Second macro is your complex carbohydrate. Complex carbohydrate क्या होता है? Like it's not the empty carbs, it's not like a chocolate, it's not like a besan का लड्डू, it's not Hmm. like anything that body में जाके sugar को बढ़ाता है. Complex carbohydrate is your sprouts, it's your veggies, it's your fruits, which is high profile complex sugar, जो पेट में जाके धीरे 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 डाइजेस्ट होता है. दैट्स द फूड यू नीड इन योर बॉडी. ऑलवेज गो फॉर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स. इसीलिए मैंने बोला जब थाली सामने आती है ना, लुक एट इट, देखो कि इसमें मेरे ब्लड शुगर को क्या बढ़ाएगा और क्या घटाएगा. सो Whatever. स्टे विद बिल्कुल दैट. बिल्कुल बिल्कुल. And then of course water, that is again your macro, you need a lot of it. 3 से 4 लीटर आपको होना ही होना है. And then you come down to the micros. माइक्रोज में ना हम लोग सोचते ही नहीं है ज्योति कि वी नीड ड्राई फ्रूट्स, वी नीड सीड्स, वी नीड all kinds of colors in our body. Like if I ask you, Absolutely. last 1 week में आपने पर्पल कलर का क्या खाया? बीटरूट. Yeah, that's maroon. अच्छा, पर्पल कलर का कुछ आता है क्या दोस्त? फिर यहाँ से शुरुआत करो तो. Okay, if I ask you last 1 week में आपने ब्राउन कलर का क्या खाया? So we have to think, मैंने क्या हाँ. खाया था? ब्राउन में सिर्फ Okay. चीकू आता है, डेट्स आता है, यही चीजें समझ में आती है. एंड हाँ, नहीं, आई एम वी एक्चुअली थिंकिंग बिकॉज़ डेट्स एंड चीकू सिंग्स बॉर्डर लाइन के लिए ये सब काम नहीं करता, तो मुझे जेन्युइनली सोचना पड़ रहा है, ओके, ब्राउन कलर का क्या आता है? बट एंड I इफ think आई colorful platter, even when we suggest mood variant or for the mental health, we also say कि your platter should be colorful. That's how the funda goes. या But yeah, there are a lot of things to talk about, but time is a constant. And मैं और वंदना साथ में बिल्कुल एक amazing session लेके आए हैं, which is called Shine, and which is for corporates, which we're going to take care not only about your mental health but also your physical health. Amazing tips by Vandana, which is wholesome wellness coach, as well as there will be another tip top exercises, actual exercises will be included. uh, so you can leave a comment to us and we will get back to you in detail with the program. And if you have any questions in for Vandana, please drop in comment later on. I'm sure she will get in touch with you. Even if you're looking for one-on-one session, drop a comment. Her team will get back to you. It was wonderful having you here. I'm sure कहीं ना now whoever people like me अभी हम mango जा सकते हैं वहाँ. So the people gonna give you big thank you here. And it was wonderful having you here. And someone में जो स्पेशली गलतियां करते हैं वो क्या नहीं करनी चाहिए, and what should be included, what is not. I think वो काफी myth आज clear हुए हैं. So thank you so much. It was my pleasure. I had a wonderful time talking to you, Jyoti. Thank you so much for having me. Thank you. Thank you. Just one second.